Hello learner, in this video we are going to see the concept of interest on capital. Now in earlier video we have seen that whenever partners are mutually decided their agreement and will make a deed, in that it is specifically written that interest on capital is to be paid or not, right? So if it is given in the partnership deed that interest on capital at the rate 6% or interest on capital at the rate 5% or whatever the percentage they have decided mutually, वो रेशियो वो परसेंटेज के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, राइट? तो एट द एंड ऑफ द ईयर वॉट एवर क्लोजिंग बैलेंस, वॉट एवर द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज देयर, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस एंड करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस, वॉट एवर इट इज़ देयर, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. And that is supposed to be paid to the partners by partnership firm, right? So उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं टू हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आज हम वो देखने वाले हैं. नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसिवली अग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स ने कुछ म्यूचुअली डिसाइड ही नहीं किया है, there is nothing mentioned regarding interest on capital in the partnership deed, then no interest will be given to the partners on their capital. When the deed specifically provides for it, interest on capital is credited to the partners at the agreed rate, which with reference to the time period for which the capital remained in the business during the financial year. Now say it might be happen that partners withdraw money from the business in between of the year 2, 3, 4 times, right? So whatever the capital is there, उसमें से वो ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पार्टनर्स को अग्रीड रेट के ऊपर इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो अमाउंट जब तक बिजनेस में रहेगी उस टाइम पीरियड का ही हमें इंटरेस्ट देना है. मान लो मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया इन अ बिजनेस इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, राइट? So whatever the 5 lakh I will keep as it is in the into the business till that time period I will get the interest at the end of the financial year, right? मान लो मैं 5 साल तक उसमें कुछ अल्टरेशन करता ही नहीं हूँ, 5 साल तक वो 5 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट करके ही रखे हैं, देन एवरी 5 years अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो एवरी 5 years I will get the interest on capital at the specified rate of interest. Interest on capital is calculated with the due allowance for any addition or withdrawal of the capital during the accounting period. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने कुछ विड्रॉ किया है तो उतनी अमाउंट आपका इंटरेस्ट में से कट हो जाएगी, राइट? उतना इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा. सो वेन एवर पार्टनर हैज़, इट इज़ नॉट लाइक ड्रॉइंग, वेन एवर पार्टनर हैज़ इंट्रोड्यूस सम फर्दर कैपिटल इनटू द बिजनेस इन बिटवीन ऑफ द ईयर, तो उसके ऊपर उसको एडिशनल इंटरेस्ट भी मिल सकता है, right? So this is specified in the Partnership Act 1932. And another point is the interest on capital is allowed only when the firm has earned a profit. अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, तो ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी. मान लो फर्म को लॉस हुआ है, then no interest on capital will be given to the partners. Hence no interest is allowed during that year. That year the firm has incurred the net loss. जो इस साल में कंपनी को लॉस हुआ है वो साल में कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी. If in a year the profit of the firm is less than the amount due to the partners as a interest on capital, मान लो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर्स आर देयर एंड 3 पार्टनर्स का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 3 लाख रुपीज़. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 3 लाख रुपीज़, बट मेरा प्रॉफिट ऑफ द फर्म है ओनली 2 लाख रुपीज़. देन हाउ टू गिव द प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू गिव द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स. नाउ इन दैट केस द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ है उतने में से ही हमें इंटरेस्ट देना है, राइट? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 2 लाख का ही हमें इंटरेस्ट देना है to the partners, and in that case the profit will be effectively distributed in the ratio of interest on capital of each partner. Now dispute क्रिएट होगा, राइट? पार्टनर्स के बीच में कि पार्टनर्स को कम इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन कैपिटल, राइट? तो पार्टनर्स में इट इज पार्टनरशिप एक में ये दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट कम हो
it will be restricted to the profit, and that interest on capital will be given in the proportion of their capital, in the ratio of their capital invested. So, this is the topic of interest on capital, and you should focus on the last point given, that is interest on capital is restricted to the profit if the profit of the firm is less, and at that time the distribution of interest on capital will be done in the non profit sharing ratio, but in the capital ratio. Thank you.